भले कुछ भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा या बुरा, बट एटलीस्ट गो देयर फॉर वन टाइम। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये वाली बातें भी कर रहे होंगे कि यार देख लो, वापस आके मसला हो, इतने की नौकरी मिले ना मिले। आई थिंक दुबई का वर्क कल्चर आपको बहुत ज़्यादा एथिकल और बहुत ज़्यादा आपको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में काम करना सिखाता अब कराची खास के नाम से एक नई रेंज निकाली है, तो यू शुड ट्राई इट आउट। है। बिल्कुल तोड़ तोड़ की उर्दू में बात करनी पड़ती है। Hi everyone, this is Sohaib Hassan and I'm back again with yet another exciting episode of BMLH Studio, the award-winning marketers podcast. But today's podcast is going to be a bit different क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक HR professional and if you are ever planning to move to UAE, she is the right person to connect with as she is working there in a renowned company in HR department. Sadaf, welcome to BMLH Studio. कैसी हैं? Thank you Sohaib for having me at BMLH. It's an honor for us here. Thank you for taking your time out. आप यहाँ पे लीव्स के लिए आई हुई हैं, उसके लिए भी उसके बावजूद भी हमारे लिए हम अपने टाइम निकाला. इट्स एन ऑनर फॉर अस. कैसा चल रहा है? Alhamdulillah, it's going very good. And thanks for giving me the opportunity so that I can speak and I connect with many of the people. Yeah. So they always want to know that how they can go to Dubai, how they can apply for any job in Dubai. So I think this podcast will be a very beneficial for all. So a lot of people will be excited about it. Sadaf, पहला सवाल मेरा ये है, being girl, ठीक है, or you moved abroad alone, ठीक है, a lot of people I know they moved there as couples, ठीक है, वहाँ पे जाके being अकेली लड़की आपके लिए कितना मुश्किल था कि वहाँ पे जाके पहले एडजस्ट होना, जॉब ढूंढना? what were some of the challenges? How has your story been so far? I think while moving to Dubai, मुझे लगता है कि जब सबसे जो बेसिक चीज़ होती है that is your family, like how what kind of support you are having from your family. So I think my family has always been a very progressive, like they have a very progressive mindset. So when I discussed this thing with my parents that I want to go to abroad, since my two sisters are the US alumni, so एक वो चीज़ थी कि family से दूर रहना, अकेले survive करना. So I think मेरे parents जो थे वो mentally इस चीज़ के लिए prepared थे. And my father, he always been very supportive. My mother, she always been very supportive. So they really respect my decision. They said, okay, if you think that you can do it, so we are here with you. और कहीं भी कोई भी मुश्किल होगी, we will be there to support you. So I think this journey to move to Dubai was back in my mind back in 2016. So 2016 से मुझे था कि I have to go to Dubai because I always wanted to explore another part of the world. मुझे एक diverse culture में और अकेली चीज़ों को explore करने का शुरू से ही बहुत शौक था. But I think there is always a right time for anything. So 2016 में जो decision था उसको पूरा करते करते मुझे 2023 तक जो है वो wait करना पड़ा. And I think like वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे friends वगैरह भी already काम कर रहे थे दुबई में. तो एक मुझे उनकी तरफ से भी बहुत support थी कि मुझे एटलीस्ट गाइड करने वाला वहाँ पे कोई है. इट्स नॉट लाइक अ ब्लैंक कि मैं वहाँ जा रही हूँ एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग माय जर्नी. वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड शी होस्टेड मी एंड शी सेड दैट यू कैन कम. एंड मुझे लगता है कि मेरी इस जर्नी के अंदर शी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. शी ऑलवेज पुश्ड मी कि नहीं तुम दुबई आओ, यू कैन डू इट. एंड लाइक व्हाइल आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान, तो जो मेरे बॉस थे, ही ऑलवेज पुश्ड मी दैट यू मस्ट गो टू दुबई. भले कुछ भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा या बुरा, बट एटलीस्ट गो देयर फॉर वन टाइम एंड वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करो बिकॉज दे ऑलवेज हैविंग अ फेथ विद मी कि तुम जाओ और वी नो कि तुम वहाँ जाकर कर सकती हो. सो आई थिंक व्हेन आई मूव देयर इट वाज अ वेरी मिक्स फीलिंग्स क्योंकि आप जब यहाँ पे एक सेटल्ड जॉब में होते हैं, आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल्स वगैरह, आपकी हर चीज़ जो है वो ईजिली मीट हो रही है. एक जॉब को छोड़कर जाना, अपना एक पूरा करियर दाव पे लगाकर जाना, इट वाज अ वेरी रिस्की चैलेंज फॉर मी. बट आई थिंक एक इनर कॉन्फिडेंस था मुझे कि आई कैन डू इट. वो एक कैन डू वाला मेरे अंदर आई थिंक एटीट्यूड था. सो आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग हियर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू दुबई. एंड वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह फिर as I mentioned that she was there to host me, तो मुझे accommodation वगैरह का इतना issue नहीं हुआ because I have seen many people challenging with these kind of issues. And other than that, बस फिर jobs के लिए apply करना start किया and alhamdulillah then I got. So you were working here at Hudson Pharma before you left, yes. right? So that comes under Smile Industries Group. कभी ये बार-बार all the thanks to your family and the friend that you were mentioning, सपोर्ट तो होती है लेकिन इंसान को एक डर तो फिर भी लगता है कि यार मैं छोड़ के जा रही हूँ, 3 महीने का टाइम होगा, वापस आना पड़ गया, फिर दोबारा यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे जॉब मिलेगी.
So how did you cope up with all those sort of challenges या जो दिमाग में वो बातें आती हैं? I'm sure a lot of people, while they will be supporting you, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये वाली बातें भी कर रहे होंगे कि यार देख लो, वापस आके मसला हो, इतने की नौकरी मिले ना मिले। तो कैसे आपने challenges overcome किए? इट्स वेरी ट्रू। व्हेन आई वाज मेकिंग माय डिसीजन टू गो टू दुबई, सो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स दिए, बट ऑलवेज इट इज़ अ नेगेटिविटी। सो देयर वर मैनी पीपल हु वर लाइक कि मत जाओ, अच्छी जॉब है यहाँ पे, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, व्हाई यू आर गोइंग इन स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। बट आई थिंक, मुझे लगता है, एंड दिस विल बी माय एडवाइस फॉर एवरीवन, व्हेनेवर यू आर मूविंग टू दुबई, तो एक पॉइंट आता है व्हेन यू फील लाइक कि अब आपको ये चीज़ करनी है। वो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि आई थिंक आपके सामने अगर एक हजूम हो जो आपको नेगेटिविटी की तरफ माइल कर रहा हो, बट आपको पता होता है कि यू कैन डू इट। सो मेरे टाइम पे भी व्हेन आई वाज लाइक प्लानिंग टू गो टू दुबई, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे इन माय फैमिली, इन माय फ्रेंड सर्कल, दे आस्क्ड मी डोंट टेक दिस डिसीजन बिकॉज दुबई की लाइफ बहुत हेक्टिक है, हाउ यू विल मैनेज। बट मुझे लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना उस वक्त बूस्ट हो चुका था कि मुझे उससे आगे फिर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे था कि अच्छा है या बुरा है, नाउ आई हैव टू एक्सप्लोर इट, एंड दिस इज द की पॉइंट, एंड आई थिंक दिस इज द की पॉइंट व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन और आपको लगे कि आप हर तरह के आउटकम्स के लिए रेडी हैं, देन जस्ट डू इट। नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि कल्चरल शॉक आई एम श्योर आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा फील हुआ होगा, बट as far as my experience is concerned, once you have a clarity of objective in your mind कि आप करना क्या चाहते हैं, where do you see yourself after 5 years, तो फिर मेरे ख्याल में things become much easier, and that is something that you might have also thought out कि यार 5 साल के बाद पाकिस्तान में क्या होगा versus 5 साल के बाद मैं दुबई में क्या करने जा रही हूँ। बिल्कुल, आप हर तरीके से एनालिसिस कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे रह के 5 साल के अंदर आपकी करियर प्रोग्रेशन कैसी हो सकती है, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट, लोग करियर के हवाले से भी सोच रहे होते हैं, एंड देन दे आर थिंकिंग अबाउट इन फाइनेंशियल टर्म्स एज वेल। सो आई थिंक आई डिड ऑल होमवर्क फॉर दिस कि 5 सालों में मैं पाकिस्तान में कहाँ पे हो सकती हूँ, एंड देन 5 सालों में मैं दुबई में कहाँ हो सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ करियर एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक ब्लाइंड फोल्ड डिसीजन नहीं ले सकते। व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू मूव टू अब्रॉड, विच एवर कंट्री इट इज, you need to make a very well thought out decision. So we were talking about Hudson Pharma. I know a lot of people from their marketing team. They are very good friends with us. और वो पाकिस्तान के कुछ जा चुके हैं, हडसन से मूव हो चुके हैं. Any of the funniest incident that you can recall with your marketing team? क्योंकि जब मैंने जिन भी organizations में काम किया, so I have a lot of funny stories with my HR departments. So कोई ऐसी आप recall कर सकते हैं? I think while working in Hudson Pharma, it was always a pleasure to work with the marketing team because we had a lot of opportunities. हमें बहुत सारे projects ऐसे मिले, बहुत सारी trainings ऐसी मिली जिस पे हम लोगों ने collectively काम किया. Funny incidents होते रहते थे, like such as ऐसा कोई incident नहीं हुआ जिसको मैं बहुत time तक याद रख सकूं. But yes, I had one funny incident. I was in a university, हमारा एक job fair था. So I was there, I was conducting the interviews of the, you can like जो fresh bachelors वगैरह थे जिन्होंने masters किया हुआ था. So I was just having the interview. So when candidate came for the interview, and when I was conducting the interview, so वो बार बार अपनी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा blink कर रहा था. So I thought that maybe he's very much confused while giving the interview. So वो moment थोड़ा सा funny भी था. लेकिन at that time I stopped the interview and I asked that candidate that, are you nervous? Is because there is nothing to be nervous about this interview. because बहुत आप informal सा एक interview ले रहे होते हैं वहाँ पे. Then that candidate got very shocked क्योंकि उसने कभी इस तरह से experience नहीं किया कि अगर आप nervous हैं तो कोई आपको stop करे और आपसे पूछे. Then I offer, like, you can say, water to him and I ask him, there is nothing to be nervous about it. You can just take your time and you can go and revise your notes, whatever you want to say. And then he was very shocked. He said, are you serious about it? I said, yes, you can take your time and we can do it again. So he took his time, he went, he just studied some notes, and then he came up with again like the confidence, and then he again started giving the interview. So I think this was a like नहीं यार, but again good motivating story at the same point in time, क्योंकि HR needs to motivate all the employees regardless of the departments they are working in. A lot of people say Dubai का जो work environment है, जो workplace है, that is far ahead of us. So how has been your experience in terms of working over there?
कितना ये बात सच है, या क्या आपको लगता है कि ये खाली एक मिथ है? आई थिंक कल्चरल अगर हम डिफरेंस की बात करें तो when you are working in Pakistan, you are working with the same mindset. आपकी nationalities, आपकी language, you don't feel any barrier. But when you are going to Dubai, you will feel a lot of diversity over there. वहाँ पे हर nationality के लोग आपको मिलेंगे. I think the first and foremost thing is that how you will respect their values, how you will respect their thoughts, how you will respect their opinions. पाकिस्तान में ऐसा होता है अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बड़ा इजीली जो है ना किसी को अपना ओपिनियन दे देते हैं, किसी की बात सुने बगैर अपनी बात रख देते हैं. बहुत ही एक लाइक कैजुअल सा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है पाकिस्तान में. बट आई थिंक इन दुबई दिस थिंग आई हैव लर्न एंड दिस thing I will advise to the new generation and the new people who are planning to come to Dubai that you have to be very open-minded while coming to Dubai. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपके सामने कोई बात रखी है आप भले उसे सेकंड ना करते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन एंड देन यू कैन लाइक पुट योर थिंग बहुत ही एक लाइक एथिकल मैनर में आप अपनी बात रखिए, बट यू कैन नॉट पॉइंट आउट एनीवन कि आपकी ये बात ठीक नहीं है या आपकी थॉट्स मेरी थॉट्स के साथ अलाइन नहीं करी. सो आई थिंक दुबई का वर्क कल्चर आपको बहुत ज्यादा एथिकल और बहुत ज्यादा आपको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में काम करना सिखाता है. So I think that is the thing that we have inclusivity भी, as you mentioned, कि हर रेस का बंदा, हर कंट्री का बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, तो इंक्लूसिविटी भी इंप्रूव सेंस आपने वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है क्योंकि एक वहाँ पे एक बैरियर जो आता है वो समटाइम्स लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं. when you are working with Emiratis, they cannot speak English, they are more into Arabic. So I think वहाँ पर भी you have to manage yourself कि किस तरीके से you have to make them understand about your opinion and about your thoughts. So I think this thing people will learn while working over there. बिल्कुल सही. So since you are looking after HR, in terms of HR as well as marketing, what are some of the skill sets that you have witnessed over the past few years? अगर आपको HR में जाना है या अगर आपको for that matter marketing में या किसी और फील्ड में भी जाना है, तो what are some of the skill sets that while you are planning to move to Dubai, उससे पहले आप थोड़ा सा उन पे brush up करके आए? I think the first and foremost the skill set will be the communication. I think the people have to work a lot on their communication. वहाँ पे जाके किस तरीके से you have to connect with the people, क्योंकि आपको different nationalities के जब लोग मिलते हैं. मेरे साथ थोड़ा सा funny incident ये भी है. The company I am working, वहाँ पे Indians काफ़ी हैं, like Indian slavers भी हैं. They cannot speak English and they cannot speak Hindi. So उनको हिंदी समझ आती है बट बहुत ही माइनर. तो समटाइम्स मुझे बिल्कुल उनके लेवल पे उतर कर बिल्कुल तोड़ की उर्दू में बात करनी पड़ती है. मुझे लगता है कि समटाइम्स मेरी अपनी उर्दू भी इसमें ख़राब हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू मैनेज कि आप किस तरीके से फिर उनसे कम्युनिकेट करेंगे. हियर वी कैन लाइक टॉक फ्रीक्वेंटली इन उर्दू, इन इंग्लिश, बट वहाँ पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनेज करना पड़ता है. तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मैं समटाइम्स बहुत ही थोड़ी सी उर्दू में ऐसे लफ्ज़ जो हिंदी और उर्दू में सेम हो ताकि मैं अपनी बात उन तक डिलीवर कर सकूँ. अदर देन दैट आई थिंक you have to be very open-minded regarding the diversity, and then you must be very flexible. क्योंकि दुबई का working environment, I think if you want to move to Dubai, you have to be very flexible in every time because वहाँ के working hours sometimes so वहाँ पे weekend पे भी काम करना पड़ता है आपको, because दुबई में you are living alone. आप घर आते तो आपको हर चीज़ हुई भी नहीं मिलती. You have to manage everything at your own. तो वहाँ पर जब वीकेंड पे काम करना पड़ता है लोगों को तो थोड़ा सा एक एग्रेशन होता है कि दैट वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें मैनेज करनी है. सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन दीज टर्म्स एज वेल. बहुत पेशेंस रखना है एंड आई थिंक शुरू का 1 या 2 साल जो होते हैं दे आर वेरी सर्वाइविंग. बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आई थिंक अगर आप उस वाले फेज से निकल जाते हैं then everything will be very easy for you. So how about Sadaf, if we take it as a demo? So if I'm asking you and you are pretending to be an interviewee, so if I'm asking you, tell me about yourself ताकि लोग समझ सकें कि किस तरीके से इसको आंसर करना है. Sure. So whenever I go for an interview in Dubai, so I always introduce myself like myself Sadaf Malik. I am from Karachi, Pakistan. I have done my master's in human resource management and I have been into HR industry. It's been like 7 to 8 years. I have experience of the different HR functions, like I have been into TA, I have been into training and development, I have been into employee engagement and the other HR operational tasks as well. For me, when it comes to the HR, so I think the function really motivates me, that is TA and training and development, because I always want to connect with the people.
I always want to learn from the people, and I always want to teach people the new things. So I think for me, it's like a very lively thing that keeps me very motivated. Yeah. And other than that, I do have the hobbies of like painting. I like singing. I like using uh, the social apps because I've been into like Instagram one frequently. I like to post my stuff. I like to make some motivational small videos. So I think So you will be posting about this podcast as well? yeah, sure. I will be posting about this on LinkedIn. नहीं यार, amazing answer. So right, starting from who you are, from where you are, to your education, to what have you done, what are subdivisions within your department that you have worked upon, what are some of your key strengths, and bit about your family and hobbies as well. Okay, I think this is a very important question to answer in a very right and precise way. आपके इंटरव्यू के इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फिर यूजुअली यहीं से निकल के आ रहे होते हैं. सो यू जस्ट नीड टू गिव द इंटरव्यूअर सम सॉर्ट ऑफ हिंट, या आपको उसको यहाँ पे लाके छोड़ना पड़ता है कि जहाँ से आप चाहते हैं कि वो अगला क्वेश्चन पूछे. एंड वंस यू आर प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ, सो यू विल डेफिनेटली एस इट. सो थैंक यू सो मच फॉर द रोल प्ले. हमने पहला पॉडकास्ट में रोल प्ले भी कर लिया. सो सदफ, थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला भी हम ये पॉडकास्ट करते हैं. So I'll be now moving towards rapid fire round. Sure. I'll be asking you as many questions as I can. Okay, within 1 minute only, and you need to be as impromptu, as quick as you can be. I'll try my best for this. Your best friend. There are two, so I can mention both of them. There's Homa and Fatima. Homa and Fatima. Yeah. Fatima, सुन लें आप. सही है. तो your best boss so far. My best boss so far, like the one I was having in my previous job. Mr. Rehan Aziz. Say your favorite marketing campaign. The one recently I saw it for Barbie movie. It was a very eye-catchy. The way they did it was very eye-catchy. Yeah. कोई jingle याद है आपको marketing का? No. नहीं. सही है. HR में आपको सबसे मजेदार डिपार्टमेंट कौन सा लगता है? Training and development. Except for HR, which is your favorite department? For me, I think marketing. Why? Because I think you can connect with the people, and then you will be having a lot of आपके पास बहुत ज़्यादा एक ground होता है where you can do your own campaigns, you can come up with your own ideas, and you can connect with your own sales team. आप अपना एक पूरा brand launch कर सकते हैं. So I think for me it will work. If I would not be in HR, then I'll go for the marketing side. Good scene. तो as you mentioned कि दुबई में open minded रह के जाना पड़ता है, तो planning to shift towards marketing also? Not as of now, because my forte is HR, so I just want to stay there. But in case, if I got a chance. बिल्कुल सही है. चलो. So our next segment is in which we call lost in transition. So I know you are HR professional, but हम आपका थोड़ा English उर्दू का टेस्ट करेंगे. So I'll be giving you some taglines. You don't need to recall the brand, but अगर मैं आपको English में tagline दे रहा हूँ, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या वाइस वर्सा. अगर उर्दू में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. दाग तो अच्छे होते हैं. Marks are good. खुश रहो. Be happy. कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहा. The sweetness in candy you will never find anywhere. जबरदस्त. ब्राइट से ब्राइट कर देगा. Bright will gonna make everything right. तुम ही तो हो. You are everything. Good things at work. काम में अच्छी चीजें. बाई किया तो तुमने भाई किया. If you hired a bike, you hired a brother. मैं ते Honda ही लेसा. I'll gonna buy Honda in any way. मैं ते Eagle ले भी लई. I have already purchased the Eagle. Think different. अलग सोच. Finger licking good. This is very confusing for me. I think I don't know. Right. So you have already given some tips about the interview. Any particular tips about resume writing या क्योंकि आप I'm sure इतनी सारी resumes different departments से देखते रहते होंगे. कभी ऐसा होता है कि आपने resume देख के कह दिया यार इसको तो बुलाना ही नहीं है, तो वो क्या improve कर सकता था वो इंसान? I think दुबई में जब हम resume review कर रहे होते हैं, so first and foremost thing your name. वहाँ पे एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट यू कैन नो कि आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है. ऐसा ना हो कि आप दुबई बेस्ड कंपनी है
जो कैंडिडेट है वो शारजा में भी कोई बहुत दूर जगह पे रहता है, सो आई ऑलवेज कंसीडर दिस थिंग. मैं हमेशा पूछती हूँ in which part of the Dubai you are living, and I always guide कि if you are traveling by metro, if you are traveling by bus, तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, because I always want to facilitate, because जो लोग न्यू होते हैं दुबई में, they always face this challenge कि कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, because taxi is so expensive. You have witnessed there as well. So I think this thing is very important to always mention in which part of the Dubai you are living. And then you should always mention your visa status. Either you are having employment visa, if you are having a visit visa, so वो कब तक के लिए valid है, ताकि फिर जो इंटरव्यू की कॉल है वो उसी हिसाब से की जाए. ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और जहाँ पे आपने CV भेजी है दे आर नॉट अवेयर विद दैट. सो आई थिंक आपको अपने विजिट वीज़ा की वैलिडिटी वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. एंड काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इफ़ दे आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई, सो वो कंपनी का नाम तो मेंशन कर देते हैं, बट दे आर नॉट मेंशनिंग द लोकेशन. कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में काम किया तो दे ऑलवेज मेंशन दैट दे हैव वर्कड इन पाकिस्तान. क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और नहीं लिखा हुआ होता तो हम भी डायग्नोज समटाइम्स नहीं कर पा रहे होते. बट व्हेन द पर्सन कम फॉर द इंटरव्यू तो पता चलता है कि ही इज हैविंग ऑल द एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज और हर होम कंट्री. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटेट करती है, और जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनको भी CV स्क्रीन करने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है. सो इसके अलावा वट एवर यू आर राइटिंग ऑन योर CV, रीड योर CV बिफोर कमिंग फॉर द इंटरव्यू. क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अभी भी ये अलमिया है कि लोग मास्टर्स भी कर लेते हैं, बैचलर्स भी कर लेते हैं बहुत अराउंड यूनिवर्सिटीज से, लेकिन वो CV जाके फिर भी किसी और से बनवा रहे होते हैं. एंड दे कम फॉर द इंटरव्यू और उनकी CV में से ही कोई भी एक वर्ड पूछ लिया जाए, लाइक सक्सेशन प्लानिंग. किसी की रोजी चल रही है यार, वो भी HR वाले ही लोग होते हैं जो CV बनाते हैं. आप किसी से अगर गाइडेंस भी ले रहे हैं तो always read your resume before coming for the interview, so at least you must be having the confidence to talk about it. आपको पता तो होना चाहिए. आपको पता तो है, otherwise you will be blank. What you will gonna say? क्योंकि मेरे पास एक दफा हुआ था, एक बंदे ने सक्सेशन प्लानिंग का वर्ड मेंशन किया हुआ था, that I had been to succession planning. When I asked him, okay, can you explain me what is succession planning, and he was blank. He was like, I don't know. So इस तरह से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं. Whatever you are writing, read your CV एटलीस्ट 1-2 बार उसको अच्छे से, एंड द वोकैबुलरी यू आर यूजिंग इन योर CV उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. सो दिस विल गिव यू मोर प्लस पॉइंट्स टू बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. सो यूटिलाइजिंग योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग कर रहा है. हेड्स ऑफ टू यू, अ लोन गर्ल मूविंग टू दुबई, सेटलिंग डाउन देयर. चैलेंज का आपने ऑलरेडी बात कर ली. मुझे ये बताएं कि इफ़ समबडी वांट्स टू टेक द राउट दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन, व्हाट आर सम ऑफ द एडवाइजेस कि भाई आपके पास कितने 3 महीने के लिए फॉर एग्जांपल पर मंथ आपको कितने पैसे रख के लेकर जाने चाहिए. व्हाट आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आपको सस्ती जगह रहने के लिए मिल जाए, कम खर्चे वाला खाने पीने पे कैसे गुजारा करना है. क्योंकि ऑब्वियसली वंस यू आर देयर एंड यू हैवंट गॉटन अ जॉब, तो हर किसी की कोशिश ये होगी कि मैं अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करूँ. तो व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव? Okay, so I think अगर आप दुबई मूव कर रहे हैं and you are not having any friend or any relative over there and you have to manage anything, everything at your own, so सबसे पहले I would advise go for the places जहाँ पे आपको बहुत cheap price के अंदर बेड स्पेसेस मिल सकें. Obviously यहाँ पे हमारे अपने अपने घर होते हैं, अपने अलग अलग कमरे होते हैं. When you go to Dubai और जब आप बेड स्पेसेस देखते हैं तो एक दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है कि ये जगह है, यहाँ मुझे रहना है. आप वो चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर पाते. क्योंकि मुझे भी शुरू में इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था. When I started moving to my own flat, तो मुझे भी इस चीज़ ने बहुत डिस्टर्ब किया, because I have been into many places. लेकिन मैं वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि एक छोटे से बेड में मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगी. बट फॉर दोज लाइक उनका वहाँ पर कोई नहीं है, दे आर कमिंग एट देयर ओन. सो देयर आर सो मेनी प्लेसेस. डेरा वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत ही चीप प्राइस के अंदर बेड स्पेस, अच्छी बेड स्पेस अवेल कर सकते हैं. कितने दिरहम्स हैं? I think the prices are starting there from 1,000 से स्टार्ट होती है. लेकिन उसमें कुछ ऐसी बेड स्पेसेस भी होती हैं जो आपको 600 में भी मिल जाती हैं, 700 दिरहम में भी मिल जाती हैं. तो एटलीस्ट ये होता है कि यू आर हैविंग अ मार्जिन कि अगर आपकी 700 की बेड स्पेस है तो 2 महीने के लिए यू हैव टू सेव 1400 दिरहम. आपके 1400 दिरहम वहाँ पे बिल्कुल हो, ताकि आपको रहने का मसला ना बने. एंड देन द बेसिक टूल फॉर फाइंडिंग अ जॉब इज योर लैपटॉप. I think laptop is the whole world there. वहाँ पे आपके पास सारी opportunities आ रही हैं. You can open LinkedIn, you can open Indeed, and then you can start applying. And मुझे वहाँ पे लगता है कि if you are not going for a very fancy dining, तो वहाँ का जो grocery वगैरह है that is very cheap. अगर आपको खुद खाना पकाना आता है तो I think
लाइक वीकेंड्स पे वहाँ काफ़ी सेल भी लगती है फ्रूट्स वगैरह पे एंड दूसरी ग्रॉसरीज वगैरह पे. सो यू कैन डू योर ग्रॉसरी ऑन द वीकेंड्स एंड इफ़ यू आर अ गुड कुक you can cook and you can like तो आप खाने अच्छा बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड कुक. सो मुझे खाने वाला जो फेज है वहाँ पे तो मुझे हम कैसे माने ये बात? यू कैन कम टू दुबई एंड आई कैन होस्ट यू. नहीं तो आप कौन से मसाले के ब्रांड यूज़ करती हैं? वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे आपको मसाले मिल जाते हैं बट आई थिंक क्योंकि हमारे BMLH वाले ग्रुप में ना दो जो टॉप मशहूर मसाले के ब्रांड हैं पाकिस्तान के दोनों हैं, तो वहाँ पे अवेलेबल हैं. उन दोनों में से भी एक मेरी प्रेफरेंस पे हमेशा रहता है. वो तो नाम ले दें आप. शान. मैं शान के मसाले बहुत ज़्यादा कंसीडर करती हूँ. यही होता है. तो मेरी फ्लैट के नीचे मार्ट है वहाँ पे सारे शान के मसाले से. व्हेनेवर आई एम क्राइविंग फॉर बिरयानी मसाला लाओ, बिरयानी बना लो, मुर्ग छोले बना ले मसाला. वैसे नेशनल ने ना आप कराची खास के नाम से एक नई रेंज निकाली है, तो यू शुड ट्राई इट आउट. आई थिंक वो अभी तक वहाँ पे शायद आई नहीं है या मेरे मार्ट में यहाँ पे हैं तो शराब दे भिजवाएं यार इनको भी, ताकि ट्राई आउट करें और आप दुबई में आई वुड लव टू. ठीक है, तो ज़बरदस्त. सो yeah, you have been a great value addition, Sadaf. You have been helping out people in our UAE KSA wala group, and we are soon going to come there to host you all guys, inshallah. How has your journey been so far with BMLH? आप क्या कहना चाहेंगी BMLH के बारे में? I think this journey has been very fantastic. As of now, मुझे लगता है कि आगे चल के भी we will gonna do a lot of joint ventures together. And I think this is a very good start. All credit goes to you and your team, the way you guys are working to like serve the new generation. I think this is incredible and I'm very happy that somebody at least took this a step. क्योंकि कितना ज़्यादा गैप था हमारी जनरेशन में. हमारे जो न्यू बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, दे डोंट हैव सच प्लेटफॉर्म जहाँ से उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें. सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन एवरीवनस लाइफ एज ऑफ नाउ. And inshallah आगे भी चल के, because if you are like leading this, we are hoping that many more things will come. All possible because of people like you and my other co-founder Taha bhai, वो हमेशा limelight से पीछे रह जाते हैं. So he has been an amazing partner throughout the journey, and obviously it's because of people like you. Any message that you would like to give to future leaders, since you have inspired a lot of people, a lot of young professionals, be it coming from HR, marketing, they will be watching you. Any message that you would like to give to them? I think the future leaders, I always say that connect with your people, always. अगर आप में और आपकी टीम में गैप होगा, you can never be a good leader. I think अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक जितने भी लीडर्स या बॉसेस मिले हैं, कभी कुछ इस तरह से मुझे फील नहीं हुआ that I don't have much experience than them. और being a leader, always give a platform to your teammates ताकि उनका स्किल सेट भी हमेशा आगे निकल कर आए. If you always want to take credit to yourself always, तो आप इस तरह से दूसरे लोगों को कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं देंगे आगे बढ़ने का. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड इन दिस वे कि मुझे जितने भी बॉसेस मिले, जितने भी लीडर्स मिले, दे ऑलवेज गिवन मी सम प्रोजेक्ट ताकि मैं खुद से इनिशिएट करूँ और मेरा जो स्किल सेट है अगर एक्वायर्ड नहीं है तो मैं एक्वायर कर सकूँ और जो मेरा एग्जिस्टिंग स्किल सेट है वो और ज़्यादा पॉलिश हो सके. So I think for the future leaders, I always want to mention this thing that always give a platform to your teammates ताकि ये जर्नी जो है इसी तरह से चलती रहे आगे भी. Zabardast. So you have basically summarized from the leadership point of view as well as from the future leaders point of view. We all as human beings are social animals and we cannot live without connecting. So stay tuned with us, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much, Sadaf, for being here with us at BMLH Studio. It was pleasure talking to you and I'm pretty much sure that the audience will love your episode. और जो भी दुबई देखने जा रहा है, it will be a great asset. जॉब सर्च करने जा रहे हैं, बिजनेस ढूंढने जा रहे हैं, the tips that Sadaf has shared will be with you for longer and they will help you out for sure. This was an amazing episode with Sadaf Malik, an HR professional from Dubai and our UAE and a member of our UAE BMLH group. This is your host Sohaib Hassan, co-founder BMLH, signing off. Thank you.